बोले ना लाइव जा रहे करके, लाइव जा रहे करके बोले। कपिल सर शुरू करें। सर शैल वी स्टार्ट नाउ? रुकना बाबा, बताता हूँ ना, 1 मिनट रुकता हाँ हूँ। ओके सर। अच्छा शेयर कर। Yes, we can start. ओके सर। A very good afternoon to one and all present here. I, Dr. Vinod Shende, welcome you all in the third day of 7-day online workshop on soft skills. Respected Principal of St. Kesrimal Porwal College, Kamti, Professor Dr. Vinay Chavan sir, Director of Vasantrao Naik Government Institute of Arts and Social Sciences, Nagpur, Dr. Manohar Kumbhare sir, the Chairman of Board of Studies and the Head of English Department of Vasantrao Naik Government Institute of Arts and Social Sciences, and the convener of this event, Dr. Kapil Singhal sir, Head of the English Department, St. Kesrimal Porwal College, Kamti, and the convener of 7-day online workshop on soft skills, Dr. Swapnil Dahas sir, all the coordinators of this event, and my dear students. I once again welcome you all on this virtual platform of 7-day workshop on soft skills. Today, we are privileged to have Dr. Archana Gupta ma'am, Associate Professor of English, Srimati Binjhani Mahila Mahavidyalaya, Nagpur, as a resource person for today's session. She will be delivering her lecture on active listening and empathy. Before I invite Madam to deliver her lecture, let me take this opportunity to introduce her in brief. Dr. Archana Gupta is an Associate Professor of English in Srimati Binjhani Mahila Mahavidyalaya, Nagpur. She has more than 16 years of teaching experience at UG and PG level. Madam has completed UGC minor research project titled Universality in the Myths Used in the Development of a Storyline by Girish Karna with reference to Yayati, Bali the Sacrifice, and the Fire and the Rain in 2013. Dr. Gupta has published and presented around 28 research papers in state, national, and international journals of review. She has also published her research articles as chapter. Madam has also been appointed by Honorable Vice Chancellor Rashtrapati Shivaji Maharaj Nagpur University as a member of English Board. Madam has been instrumental in organizing various activities as a convener of different cells in her college. She has been invited by many colleges as resource person, delivering lectures on different topics. Such an eminent personality is with us for today's session. So without taking much of time, I request you, madam, to deliver a lecture. Madam, over to you. Madam. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much for inviting me, for giving a so nice introduction of mine. First of all, I must say good afternoon to everyone. First of all, I must congratulate Bhasha Abhyas Mandal and Department of English of State Kesri Mal Porwal College and Vasantrao Naik Government Institute for Arts and Social Sciences for organizing this 7-day online workshop on soft skills. And I would also like to extend my gratitude for making me a part of this workshop.
thank you very much, the organizers and organizers of both the colleges. Thank you very much. And coming to the session, the topic I have been assigned to deliver my talk on is active listening and empathy. It's a very crucial topic, especially in the present time. See, this topic, active listening and empathy, it has two parts in itself in the topic. The very first part is the active listening, and the second part of the topic is empathy. So to begin with, what we'll do is we'll first see what exactly active listening is. To begin with, let me explain what active listening is, and then we'll proceed to empathy. So, in this presentation, बिझी दाखवला आहे मीटिंग मध्ये तर yes, मला कोणाचे फोन बी नाही येऊन राहिले प्लीज माईक बंद करा ज्यांचे पण is my presentable visible to all? Is my presentation visible? Am I audible? No. You are audible, but not the presentation is not shared yet. I think you are a co-host. I have, yeah. Just a minute. I'll check if I have co-hosted you. ट्रेनिंग घेत You are co-host, ma'am. You can share. Am I allowed to share my presentation? Yeah, you are. You are allowed. Yeah. Is it आपको now? अलाउ नहीं करेंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे मैडम? यहाँ भी? Sir, is it now? Sorry, yeah, it is. It is shared. Yeah. But फुल स्क्रीन मैम is it visible, my presentation? Is it displayed on the screen of everyone? It is visible ma'am, just make it full screen. Okay. I think it's in full screen, ma'am. And I'm getting a message Ma'am, that click on please from move this beginning, window from away beginning from पे the click shared कीजिए. application. उसके बाद में स्लाइड शो पे सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक कीजिए. I suppose it's now visible. It's displayed, very well displayed. Okay. So, the topic that has been assigned to me to deliver this talk is active listening and empathy. Active listening and empathy. It has two parts. Before we proceed with the talk, I'd like to give the presentation or outline. It is, and through this presentation, we'll come to know about active listening. What are the benefits of being an active listener? What is empathy? Why is empathy important? How to use active listening and empathy together? How to overcome barriers to active listening and empathy? And ways we can improve our empathy. So, what is active listening? Active listening is more than hearing someone's words. It is communication skill that involves तोच टाकून देता का it is a communication skill that involves going beyond simply hearing the words that another person speaks. Now, let me elaborate. Active listening is the ability to focus completely on speaker's words. The message, what is there in the message? We comprehend the message, the information which is being given to us thoughtfully. And it is very different from passive listening. In passive listening, it is
we just hear the words. We do not pay attention to the words, to the message which is being conveyed to us. This is the difference between active listening and passive listening. To clarify it, let me give an example. If suppose you have got a great news to share with, many a times you have many things to share. It may be a news, it may be a sad information, it may be a setback, whatever it may be. You feel to share it. At that time, definitely you find a person, you do not share with each and everyone. Rather, you select someone with whom you feel like sharing only because these set of persons are active listeners. You just not share your information with everyone whom you come across. You only share with a set of persons whom you are comfortable with whom you are sure that this person will not pass on your information to someone else. This person won't make fun of the information that you have passed to him or her. You make it sure, and then only you pass your information. Now, what are the benefits of active listening? It helps you build connections. Connections. How? Just now I said, when you have any information to share with, be it a sad or a happy information, you find some people in your life, you have some people in your life with whom you are very comfortable with whom you feel that if you share the information, it won't be passed on, it won't be taken otherwise. And with that person only, you share your information, and in this way, a connection is built up. And once a connection is built up, you keep on sharing your information in life because you have built trust. And once this trust is built up, you find that many problems in your life are solved automatically. Now, build it. How a trust is built. It's very important. It's not that easy. How the trust is built up. Trust is built up when the listener listens to the information passed very carefully. When the listener is not judgmental. वो कोई remarks pass नहीं करते. They just listen silently without making any remarks. And on top of it, once they get the information, they do not pass it on. This is how trust is built up. And when we listen silently, when we listen thoughtfully, when we listen and comprehend the message, we in a way help the person to solve his or her problems. And once you help the person to solve his or her problems, again trust is built up. Again, connection is built up. And in a way, if you listen carefully to whatever is conveyed to you, your knowledge increases. And when your knowledge increases, your understanding also, and your understanding to the topic also increases. And when it increases, definitely you become well-informed person. And when you become well informed, anytime you can apply this information in either real life situation or either writing examinations or giving presentations or whatever it is. You can apply that information very well. And when you listen carefully, when you aren't judgmental, then you avoid missing critical information, you avoid missing important information as well. And this is the dialogue which many a times a teacher uses in the classroom while teaching. Dear students, listen properly, otherwise you will miss on any information which I am passing on to you. This is a very common dialogue. Why it is said that you be active listener in the class? Simply because you get the information which the teacher is passing on very well. And if you comprehend it, you understand it. And if any point of time you are not clear about the information, you may ask doubts.
And asking questions also clarifies on the information which is being passed on to you. So these are some of the benefits of being an active listener. But let me tell you one thing. To be an active listener is not easy. It is not a simple thing to be taken care of. It's really very difficult, especially when you are in a real life situations. It becomes very difficult for you to be an active listener. Why is it so? Why? Because many a times we focus on our own thoughts. हमारे खुद के विचार दिमाग में चलते रहते हैं, और जब हमारे खुद के दिमाग हमारे विचार में हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, क्या हम सुन पाएंगे सामने वाले को प्रॉपर से? नहीं सुन पाएंगे ना। और फिर जब हम सुन नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा? सामने वाले के बातों को हम पूरे तरीके से 100% नहीं ले पाएंगे। और क्या होगा? सामने वाले के ओपिनियन, सामने वाले के थॉट्स, हमारे थॉट्स और हमारे ओपिनियंस में मिक्सअप हो जाएंगे और बात अलग बात बन जाएगी। जो है वो नहीं रहेगी, बल्कि कुछ अलग ही स्वरूप आ जाएगा। सो फॉर दिस रीजन वी हैव टू बी an active listener. और ये this active listening skill is a skill that we have to keep on improving, keep on adding to our personality, because it's not the thing that we can do it instantly. We have to inculcate the habit of listening actively, and it will happen. It happens gradually, not all of a sudden. Though some people are good listeners, some are not. But then those who are not can train themselves to be a good listener. And how can we train ourselves to be a good listener? You'll come to know. Now, the second part of the topic is empathy. What empathy is? Empathy is the ability to see things from another's perspective and feel their emotions. See, it is the ability to put yourself in someone else's shoes and imagine how they feel, think, and experience a situation. Then only you can be an empath. You have to feel what other person is thinking, what other person is going through. And when you see things from another person's perspective, you sympathize with their emotions. And when you sympathize, the relationship that is built is stronger. Then it doesn't matter whether you are at workplace, you are with friends, or you are in a personal life. I'd like to elaborate on this point with an example. See, we had flash floods last year. That was a time when there were three friends. Three friends were there. They were studying in BA first year, and their exams were coming nearer. All the three students were preparing well. बहुत अच्छे से इन तीनों की पढ़ाई चल रही थी. They were making notes. They were referring to books and preparing for the exam so very well. These were the 12 topper students. They all did fairly well in the 12th board examination. Then at the time of flash flood, what happened? One of the friends, I'll name him. See, the three friends are Rahul, Rohit, and Dharmendra. Okay, Rahul, Rohit, Dharmendra. One of the friends at Dharmendra's place, flash flood happened. His house became a victim of flash flood. What happened then? The flood destroyed, damaged all his study material, all his notes, all his preparations, and his computer, his laptop, and everything, mobile and everything. He was too worried. How will he prepare for the examinations? He shared his worry with his two friends, Rahul and Rohit. See how these friends work out. Rahul and Rohit both are listening to Dharmendra. But see, the thought process of these two persons, how it's happening. Rahul is listening to Dharmendra, but at the same time, he is thinking, thank God it did not happen with me. Thank God my notes are safe. My notes are
intact. My notes aren't destroyed, damaged due to floods. This is the feeling of one friend. And the other friend, what he does, he listens to Dharmendra, his worries, till end, and then silently comes close to Dharmendra, hugs him, and when he hugs Dharmendra, what happens? Dharmendra puts his head on his shoulders and starts crying. The friend consoles him, and then he pats his back. And then Dharmendra says, "Dear, how will I prepare for the exams? How will I write? What will I write in the exams?" Now, this is here. Then the friend says, "Do not worry. I will provide you my notes. I will provide you my study material, my books, everything I'll provide you. I will provide you, and you will pass this exam with flying colors. Not to worry. I'll help you out." With this example, my dear learners, you must have understood what exactly empathy is. Empathy is with the second friend. See how silently he hugged Dharmendra, how silently he listened Dharmendra, hugged him and consoled him that he'll help him out, whatever the situations will be. He'll extend help in every possible way. So we can say the second friend is an empath. He has empathy for Dharmendra. This is what is expected when you have to be an empath with anyone or with any situation. So this is what it means to keep your foot in someone else's life. Am I audible? Am I getting any response, sir? Hello? Am I audible, sir? Yes, you are audible, ma'am. Okay, sir. So this is what is empathy. You need to understand another person's perspective. You need to sympathize with their emotions. And then what you will find, you have built stronger relationships. This is a pictorial representation of what exactly empathy is. One of the friends, this one is distressed. This person asks questions, asks him why he is distressed. They share their thoughts, their worries, and then empathy is built up and a stronger relationship is built up. Now, with connection to empathy, another word is there, sympathy. It's very different. These two words are very different. Empathy is, I feel your pain, whereas sympathy is, I'm sorry that you are in pain. This word feel is the very difference between these two terms, empathy and sympathy. You have to feel what other person is going through, is experiencing. Now, let me elaborate on some of the ways how you can improve your empathy. For this, you have to listen attentively. You have to be attentive. You aren't going to interrupt to the person's expression. Whatever the person is trying to say, you aren't going to interfere. And you have to ask. And if any point of time you find that you are not clear about the situation, about the things that have been shared with you, you can very well ask questions. Let me tell you, the questions that you have to ask should be open-ended questions. Shouldn't be like yes, no answer questions. Questions should be like that the speaker expresses before you more things about his or her worries.
and you should try to keep on understanding whatever the person is feeling, whatever the person is going through. You aren't going to interfere in between. You aren't going to be judgmental. You have to be. And while doing this, you have to keep aside your own biases. See, if suppose there are some relatives in your house with whom you are not comfortable with. And if you're not comfortable with, you're biased. And when you are biased, you cannot empathize with these kind of persons wholeheartedly. Therefore, if you want to be an empath, you do not have to be biased. Rather, you have to control your thoughts and opinions of others. And this in turn will help you in solving the speaker's problems and worries. Then you have to cultivate your own sense of curiosity. If you are curious, then only you will ask questions. If you are listening for the sake of listening, then the speaker will say, he is done, he is gone. But if you ask questions in between, if suppose any point of time you're not clear, then only. Otherwise, you aren't going to ask questions. If suppose any point of time you find that you need elaboration, then only you need to ask questions. You need to show your curiosity. And when you will show your curiosity, the speaker will explain it, clarify upon it. And in that way, you will understand the situation well. And then you have to work and socialize with people from all walks of life. This is very important. If you want to understand people, then it becomes very mandatory for you to work with, to socialize with all kinds of people that you come across. It means it doesn't allow you, this measure does not allow you to refrain from all those people you are not comfortable with. Rather, you should move ahead, you should move forward and socialize with every kind of people, with people whom you are comfortable and with people whom you are not comfortable. You should learn to socialize them. Then only you can understand them. And then you have to be non-judgmental. You aren't going to pass on judgments while listening to the speaker. You have to listen carefully. You aren't going to pass any remarks. Be in tune with your own emotions. And while listening, you have to control your emotions. If you control your emotions, then only you can understand the emotional reality of the speaker. And if suppose you're not involved, you're not listening to the speaker properly, you're biased, you won't be able to comprehend the message. और अगर आप comprehend ही नहीं कर पाएंगे, तो आप उसके problem का solution कैसे बनेंगे? नहीं बन पाएंगे ना. इसीलिए एक्टिवली आपको लिसन करना जरूरी है. और अगर आप एक्टिवली लिसन करते हो तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाता है आपको उसको समझना भी जरूरी है. लेकिन समझना अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव से, उसके लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से समझना और ज्यादा जरूरी है. Now, why is it important? Empathy is really very important in our life. Why? Because if you are empathetic, if you are considerate enough, तो आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हो. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है. क्यों? क्योंकि जब आप किसी को समझते हो, then you genuinely communicate. और जब आप genuinely communicate करते हो, तो आपकी एक रैपो बिल्डअप होती है. और जब रैपो बिल्डअप होती है, तो कंफ्लिक्ट नहीं होते. आप खुद भी महसूस कीजिए, जब आप लाइफ में, रियल लाइफ सिचुएशंस में होते हो, आप खुद देखिए, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट अमंग्स दोज फ्रेंड्स विद सम यू बिल्ड अप अ गुड रैपो. आप उनके साथ कुछ भी शेयर करते हो, खुशी की बात भी, दुख की बात भी, एंजाइटी भी, अपनी वरीज भी, हर चीज शेयर करते हो, है ना.
उन सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ, हर किसी के साथ नहीं करते। और इससे क्या होता है, एक बार जब समझ डेवलप होती है तो रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट कम होते चला जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। तो और ये अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली बढ़ती है। आप कहेंगे एक दिन में मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। एंड हैविंग एम्पैथी will help you to build social connection. जब आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये कनेक्शंस आपके सोशल भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ, या फिर आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, या आपके सीनियर्स के साथ हो सकते हैं। ये एक अच्छी कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं। और बीइंग कनेक्टेड टू अदर्स इज रियली गुड फॉर आवर मेंटल बीइंग एज वेल। गेटिंग कनेक्टेड ये हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है। आज मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी कनेक्शंस हो। आई डू फील लाइक गेटिंग कनेक्टेड, जिनके साथ मेरे रैपो बिल्डअप हो जाता है। और ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में एड ऑन करते हैं। ये कनेक्शन हमारे अंदर हौसला होता है। इसी का एक उदाहरण है, I'm giving presentation before you, but at times I'm scared of this technical part of handling PC and all that. And for that, I'm getting assistance from Sakshi. Why she is helping me, and why have I asked her to help me? Because a rapport has been built up. Because I'm confident that she'll help me out. If suppose any problem comes up, she will help me out. Because she understands me and I understand her. She understands my mental health. She and I know her mental strength. We both understand each other. So I asked help and she is helping me. This is why, because of empathy, I suppose. Because we very well understand each other. That's why she is there to solve this problem with me. Now, being empathetic enables people to get on with others, whether it be a loved one, colleague, friend, or complete stranger. कभी कभी बहुत अनजान लोग होते हैं, हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन बातचीत के दरमियान दोस्ती बहुत पक्की हो जाती है, क्योंकि वो वेवलेंथ मैच हो जाती हैं, क्योंकि हमारी समझ एक दूसरे के प्रति बहुत ऊंची हो जाती है कि डिफरेंसेस नहीं रह जाते और केवल दोस्ती रह जाती है। एक कंपैटिबिलिटी डेवलप हो जाती है और यही एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद बनती है। Now, how to use active listening and empathy together? Active listening is a set of skill. Empathy is also a set of skill. And when these two combine together, we call it empathetic listening. We call it empathetic listening. And what this empathetic listening does, it enhances our understanding of the other person's perspective. हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। We focus on the content and the emotions of the message and try to comprehend the underlying needs and interests of the speaker. और एक और महत्व की बात है, जब आप empathetic listening करते हैं तो आपको बातचीत के दरमियान, लिसनिंग के दरमियान आपको जो एग्रीमेंट के एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको आइडेंटिफाई करके अपने दिमाग में रखना है। और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो बातचीत के दरमियान आप पाओगे कि भाई मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ, आपको इनको भी दिमाग में रखना है। और फिर उसके बाद जब आपकी बातचीत, जब सामने वाले की स्पीकिंग खत्म हो जाए, सामने वाला अपनी बात पूरे तरीके से रख दे, तब आप उसको समझाओ कि देखो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पर ये बात बिल्कुल
गलत है, यहाँ पे तुम्हें सुधार की जरूरत है। ये एक अच्छा फ्रेंड ही ये सजेशंस दे सकता है, एक अच्छा फैमिली मेंबर ही ये सजेशंस दे सकता है। आप देखोगे, आप कई घर में देखोगे, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, हमेशा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिफरेंसेस आते रहते हैं। हम इसे जनरेशन गैप कहते हैं। ओके, जनरेशन गैप इज देयर, बट एट द सेम टाइम आप देखिए कि कई पेरेंट्स हैं और उनके चिल्ड्रन हैं, उनके बीच में कितने अच्छे से रापो बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्या वहां जनरेशन गैप नहीं है? लेकिन वहां पर एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स बहुत ध्यान से सुनते हैं अपने चिल्ड्रन की बातें, अपने बच्चों की बातें, उन्हें समझते हैं। ठीक है, आपने ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, इट्स ओके विद दैट, नहीं किया, बट यू हैव अ चांस, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, बट यू हैव अनदर चांस, एक और चांस है, नेक्स्ट एग्जाम में बैठना और पूरी मेहनत से तैयारी करके बैठना, देखो आप फिर पास हो जाओगे। यहाँ पे क्या हुआ? पेरेंट ने अपने बच्चे का हौसला बढ़ाया, उसे मोटिवेट किया, उसे सांत्वना दी, बहुत अच्छे से सुना बच्चे की बात और सारी बातें हुई। तो बच्चे ने क्या महसूस किया? मोटिवेटेड महसूस किया, और अगले अटेम्प्ट के लिए वो पूरी मेहनत से जुड़ जाता है। बट अगर इसके बजाय वही पेरेंट ये कह दे, क्या तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम तो बस फेल होते हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, ये वो ये वो ये वो, क्या होता है? वो बच्चा डीमोटिवेट होता है, और अगले अटेम्प्ट में शायद वो जो आज मार्क्स लाया है उससे भी कम लाएगा। ये फर्क है एक्टिव लिसनिंग और बीइंग एम्पैथी और एम्पैथी नहीं होने में। आपको अपने बच्चे के फुट में एज अ पेरेंट पैर डाल के महसूस करना है, उसको समझना है कि भाई उसको क्या प्रॉब्लम आई जो वो मार्क्स कम हो गए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करना है, एंड देन यू हैव टू गो अहेड। और अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, और रापो बिल्डअप होता है। नाउ हाउ टू बिकम मोर एम्पैथेटिक लिसनर? आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करते चलना है। अगर आप इमोशनली मैच्योर रहेंगे तभी आप सामने वाले को ध्यान से सुनेंगे, और जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सवाल भी आएंगे, और ये सवाल मैंने आपको बताया आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ ना में ना होकर कुछ विस्तृत होना चाहिए, जिससे बातचीत का सूत्र आगे बढ़े। और आपको बातचीत के दरमियान ये भी महसूस कराना है कि आप सामने वाले की बात को, स्पीकर की बात को ध्यान से सुन रहे हो, और केवल सुन नहीं रहे हो, समझ भी रहे हो। और इसके लिए आपको जेस्चर्स देना है, नॉन वर्बल जेस्चर्स। और ये जेस्चर्स होते हैं, आप अपने सर को हिलाओ सहमति में, सुन रहे हो ना आप? अगर आप सुन रहे हो तो आपको अपनी सहमति में सर हिलाना है। आप अपने हाथों से भी जेस्चर्स कर सकते हो, इशारे कर सकते हो, बीच बीच में बोल सकते हो, ओके, यस, अच्छा, फिर ऐसा, ये सब कुछ आप एक्सप्रेशंस दो बीच में, जिससे लिसनर को लगेगा कि हाँ भाई, मेरी बात की सुनवाई है, और न केवल सुनवाई है बल्कि मेरी बात को समझा भी जा रहा है। देखिए, ये तो एक प्रोसेस है। एक्टिव लिसनिंग एंड बीइंग एम्पैथी, हैविंग एम्पैथी इज अ प्रोसेस। और अगर ये प्रोसेस है तो इसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। ऑब्स्टिकल्स होते हैं आपके खुद के अंदर के बायसेस, आपके खुद के assumptions. You have some set of biases, you have some assumptions, और इन set of assumptions के चलते you do not comprehend the thoughts, the words of the speaker appropriately. आप comprehend नहीं करते हो क्योंकि आपके अंदर भी खुद बातें होती हैं। कभी आप डिफेंसिव होते हो, कभी आप रेजिस्टेंट होते हो, सुनने को ही तैयार नहीं होते हो, कभी आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो। ये डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल भी हो सकता है। आपका मोबाइल आपके पास रखा है, उसका नेट चालू है, उस पर लगातार मैसेजेस का इंफॉर्मेशन फ्लैश हो रहा है, तो आप क्या होता है, बार बार आप एक ध्यान मोबाइल पे देते हो, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। और कभी आपको इंटरप्शंस भी महसूस होते हैं, कोई आके बीच में बोल देता है ना? तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं।
तो आप अगर कभी भी किसी को ध्यान से सुनना चाहते हो, एम्पैथेटिक लिसनिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले काम अपनी सोच को, अपनी समझ को खुला छोड़ो, खुला छोड़ो। अपने अंदर के बायसेस, एजम्पशंस को असाइड रखो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को, मोबाइल को असाइड रखो, और अगर कोई बीच में आपको इंटरप्ट भी करे तो उन्हें होल्ड करने के लिए कहो, I'll get back उनसे कहो कि I'll get back to you after some time। और सिर्फ कहो नहीं, उस बात पे अमल भी करो कि आप उनसे कनेक्ट करो। बाद में जैसे ही आप यहाँ से फ्री हो जाओ, आप उनसे कनेक्ट करो। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया हाउ टू काउंटर योर ऑब्स्टिकल्स। यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, यू हैव टू बी क्यूरियस ऑल्सो। सामने वाला कोई बात कह रहा है, कहीं आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, तब आप उनसे सवाल करो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करो कि वो सामने वाला आपको बताएगा। अभी ओपन एंडेड क्वेश्चंस में मैं थोड़ा एलाबरेट करती हूँ। आप किसी दुकान में जाते हो, आप मोबाइल खरीदने दुकान में जाते हो और आपके फ्रेंड के साथ गए हो, ठीक है? आप अपने फ्रेंड से पूछते हो ये मोबाइल कैसा है, वो फ्रेंड जवाब दे देता है हाँ अच्छा है, हाँ अच्छा है, बात खत्म हो गई, आगे बात चलेगी। पर यदि फ्रेंड आप सवाल करते हो कि इस मोबाइल में तुम्हें क्या अच्छा लगा, कौन सा फीचर अच्छा लगा, तब फिर फ्रेंड बोलेगा देख इस मोबाइल में ये फीचर अच्छा है, इसका ये बेनिफिट है। अब आप देखिए कैसे आपके फ्रेंड ने आपके सवाल से, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन से, कैसे आपके फ्रेंड ने अपनी बात खुलकर कहना शुरू कर दिया। और बात जब उसने खुलकर शुरू कर दी तो फिर आपको मोबाइल के बारे में उसकी राय पूरे तरीके से मिल गई, है ना? और जब वो अपनी राय दे रहा है, यू नीड टू स्टे काम। बिल्कुल शांति से आपको उसकी बात सुनने की जरूरत है। शांति से सुनो और रेस्पेक्टफुली सुनो। ऐसा नहीं कि आपने बीच में उसको गलत कहा। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे भी अपनी बात सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। बड़े भी सुनाते हैं, बड़ों को तो हम रेस्पेक्टफुली कई बार सुन लेते हैं, लेकिन छोटों को कई बार हम इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी स्पीकर है, आपको उसकी बात को रेस्पेक्टफुली सुनना है। सर, एवरीथिंग इज ओके? and then you have to focus on the present moment। वर्तमान में जीना है, वो समय में आपको जीना है, ना कि आप इधर उधर कहीं और बात पे आप जाओगे। आपको प्रेजेंट में जीना है। जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तभी आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, तभी आप 100% उस सिचुएशन को दे पाएंगे और आपके डिस्ट्रैक्शंस को आप कम करेंगे। Strategies to develop empathetic listening. So, empathetic listening is not about you. It's about the speaker, जो आपसे बातचीत कर रहा है, ये उसके बारे में है। अब चूंकि ये उसके बारे में है, तो आपको उसके हिसाब से सोचना है ना? उसके हिसाब से जब आप सोचोगे तो आप सही आप समझ पाओगे, और सही समझोगे तो उसको सल्यूशन भी दोगे। कभी कभी बातचीत के दरमियान आप साइलेंट भी होते हो, सामने वाले ने अपनी बात कह दी और ऐसे समय में आप वो कुछ नहीं कह रहा है और आपके दिमाग में उसकी बात पर विचार चल रहा है, एक साइलेंट जोन भी आता है, बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। इस समय में आप कोशिश ना कीजिए कि जबरदस्ती कोई बात बोलो, भाई सन्नाटा है, शांति है तो मैं बोलूं, ऐसा नहीं है। साइलेंस को साइलेंस रहने दो, क्योंकि ये विचार का समय है। आप विचार कर रहे हो, थॉटफुली उसकी बातों पर विचार कर रहे हैं, तो फिर आप साइलेंस को साइलेंस रहने दो, और जब दिमाग में कोई बात आएगी तभी आप कहोगे। टुवर्ड्स द एंड मैं ये कहूंगी
कि जो एक्टिव लिसनिंग है और एम्पैथी है, ये हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए बहुत जरूरी है, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है ना, देखिए आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादाजी हैं, आप देखोगे, एक दादाजी का किस्सा सुनाती हूँ, हमारे पड़ोस में है। वो दादाजी अक्सर अपने फैमिली मेंबर्स को कहते हैं कि जो भी दिखा उससे कहेंगे, बेटा बाजार जा रहा है क्या? अच्छा नहीं जा रहा तो चले जाना, और जाएगा ना तो मेरे लिए वो टूथपेस्ट ले आना। अच्छा बाजार जाएगा ना तो मेरे लिए ये मेरी शुगर की दवा ले आना। अच्छा बाजार जाएगा ना मेरे लिए ये ले आना। वो लगातार कहते थे। घर वाले चिढ़ते थे, क्या दादाजी जब बाहर जाओ तो आप हमेशा कुछ ना कुछ बात कह देते हो, ये लाओ वो लाओ। अरे आपके पास तो इतनी सारी दवाइयां हैं, फिर आप और क्यों मंगा रहे हो? अभी यहाँ पे क्या जरूरत है? अभी यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जब दादाजी के पास ऑलरेडी इतनी सारी दवाइयां हैं, जब उनके पास वो चीजें हैं, फिर भी वो क्यों बुलाकर लोगों को कहते हैं, घर के मेंबर्स को कहते हैं कि मेरे लिए ये सामान लाओ वो सामान लाओ, या क्यों? यहाँ समझने की जरूरत है। शायद वजह ये भी हो सकती है कि वो दिन भर अकेला महसूस करते हैं, वो महसूस करते हैं कि वो फैमिली में अब किसी काम के नहीं है। Now that he is a retired person, he is of no use to anyone. So family members have started ignoring him. And since the family members have started ignoring him, वो अपनी presence को दर्ज करा रहे हैं कि नहीं मैं हूँ और मेरी जरूरतें हैं, और मेरी जरूरतों को भी ख्याल रखा जाए, उन्हें पूरा किया जाए। आई शुड नॉट बी इग्नोर्ड। मेरे पास आओ, बैठो, मुझसे बात करो। शायद योग का वचन। तो अगर हम ये समझ लें, उनको थोड़ा समय दे दें, उनके साथ बैठकर बातचीत कर कर उनकी बातें सुनकर, तो शायद ये दिन भर का पुकारा बंद हो जाए, मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए वो लाना। और जो चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है, आप भी बाहर जा रहे हो, मन में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, अरे क्या जब बाहर निकलो तो वो शुरू हो जाते हैं, शायद ये चिड़चिड़ाहट भी खत्म हो जाएगी, आप भी शांति से जाओगे, वो भी अपने घर में शांति से रहेंगे, क्योंकि आप जब आपके पास समय है, आप उनको समय दे रहे हो प्रॉपर। दिस इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। तो डेवलपिंग दीज स्किल्स रिक्वायर्स बहुत अवेयरनेस चाहिए, हमें प्रैक्टिस चाहिए, एकदम से नहीं होगा। आज आप, अगर आपसे कहा जाएगा कि आप ना चिड़चिड़ाओ, आज आप एकदम से नहीं चिड़चिड़ाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप दादाजी को चिड़चिड़ाओगे सामने, लेकिन धीरे से, अगर आपको बार बार आप अपने मन को, अपने दिमाग को कमांड दोगे, नहीं मुझे चिड़चिड़ाना नहीं है, मुझे उनको सुनना है, मुझे उनको समझना है, आज आप थोड़ा कम चिड़चिड़ाओगे, कल आप देखोगे, कल आप थोड़ा और कम चिड़चिड़ाओगे। धीरे धीरे एक समय आएगा कि दादाजी के साथ आप बैठ के अच्छे से बातें भी कर रहे हो, अच्छे से बाहर भी जा रहे हो, कोई कंफ्लिक्ट भी नहीं है। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपने माइंड को लगातार मानना होगा, उसकी कमांड, अपने माइंड को कमांड देना होगा कि नहीं, आई हैव टू इम्प्रूव अपॉन, आई हैव टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, ऑफ द फीलिंग द अदर वन इज गोइंग थ्रू। ये मुझे हमेशा अपने दिमाग को कमांड देना होगा। और जब मैं अपने बैरियर्स को ओवरकम कर लूंगी, तब मैं पाऊंगी कि जो एम्पैथेटिक लिसनिंग के प्रति जो अप्रोचेस चाहिए, वो मेरे बढ़ते जा रहे हैं। और जब ये एम्पैथेटिक लिसनिंग बढ़ेगी, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, और जब मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगी, और रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगी तो आपका जो एटमॉस्फियर है वो बहुत कंडूसिव होगा। ये एटमॉस्फियर, फिर वो चाहे होम फ्रंट हो, वर्क फ्रंट हो, या आप फ्रेंड्स के साथ हो, आप जहां कहीं पे भी हो, ये आपका एक कंडूसिव एटमॉस्फियर प्रिपेयर हो जाएगा। और टुवर्ड्स द कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के सिनारियो में एम्पैथेटिक लिसनिंग स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। These are the skills which are very much needed. We are so engaged in our day-to-day activities that we have become self-centered. हम इतने self-centered हो जाते हैं कि हम दूसरों की बातों को समझने के लिए समय ही नहीं दे पाते।
और जब हम समय नहीं दे पाते तो हम उसके प्रति न्याय नहीं कर पाते, और इसके चलते क्या होता है, बस यही कि हम सामने वाले के शूज में स्टेप ही नहीं करते, समझ नहीं पाते वो क्या फील करता है, वो उसकी नजर में वो दुनिया को कैसे देख रहा है, हम ये समझ ही नहीं पाते। वो इस दुनिया में किन हालातों से गुजर रहा है हम समझ ही नहीं पाते, और फिर हम कम पड़ते हैं रिलेशनशिप्स बनाने में। इसीलिए आज के जमाने में, इन द प्रेजेंट सिनारियो, एम्पैथेटिक लिसनिंग जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ह्यूमन कनेक्शंस में जो ब्रिज बनाने का काम करना है ना, वो करने के लिए हमें बहुत ज्यादा आज की तारीख में एम्पैथेटिक लिसनिंग की जरूरत है, एंड इसको और बढ़ावा देने की जरूरत है। सभी बातें होती हैं अपने हिसाब से, अपने तय हिसाब से। लेट्स कीप असाइड अवर रश, let's keep aside our assumptions and listen properly and be supportive. Now, in short, I have summarized what are the benefits of empathetic listening. It builds trust, that we have already discussed. It improves our problem solving, and we are in a position to make better decisions. हम टीम कोहेरेंस, टीम में काम करने की एबिलिटी को बिल्ट अप करते हैं, हमारा एम्प्लॉय के साथ रिलेशन बिल्टअप होता है, हम, और अगर हमारे एम्प्लॉयज के साथ वर्क प्लेस में रिलेशनशिप बिल्टअप होता है तो उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, हमारी कस्टमर सर्विस बढ़ती है वर्क प्लेस में, और इन ऑल हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्पैथेटिक लिसनिंग which I have summarized. Thank you very much. Okay, thank you so much, ma'am. So dear students, do you have any questions? Yes, any questions? हो So I मॅम. think, ma'am, they are all very satisfied. Thank you very much. Yes, thank you very much, madam, for delivering a wonderful lecture on active listening and empathy. Your lecture will definitely benefit the students to develop their skills. I take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to the principal of Porwal College, Dr. Chavan sir, and director of Vasantrao Naik Government Institute of Social Sciences, Dr. Kumbare sir, for their motivation. I also express my thanks to both the conveners of this event, Dr. Kapil Singhal sir and Dr. Swapnil Dahas sir, for their untiring efforts to organize this workshop. Thanks are also due to all the coordinators and members of organizing committee for their help and support. Last but not the least, I express my thanks to all the students for their patient listening. Thank you very much. Thank you, ma'am.